This is All India Radio. Welcome to the business news program Money Matters. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Amit Goel. नमस्कार। इस कार्यक्रम में शेयर बाजार, कारोबार और अर्थव्यवस्था की ताजा खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। आइए शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइन से। Sensex and Nifty surged more than 2% during the holiday-shortened week. Mid-cap and small-cap performed better than the Sensex. And Asian stocks climb after U.S. equity indices hit record highs on the stimulus-fueled economic recovery optimism. And let's have a look at our top story from the stock market. Sensex and Nifty zoomed more than 2% during the holidays shortened week. Today, domestic stocks remain closed to observe Good Friday, while on Monday it was closed to celebrate the Holi festival. The report of record GST collection for the last month and U.S. President Joe Biden's $2.25 trillion infrastructure plan boosted investor sentiment. Taking cues from strong gains in the global equity indices, Sensex at the BSE regained 50,000 mark, while the Nifty at the NSE reclaimed 14,800 level. During the week, Sensex climbed 1,021 points or 2.08% to settle at 50,030. And the Nifty surged 360 points or 2.48% to finish at 14,867. Mid-cap and small-cap indices of the BSE performed better than the Sensex. Mid-cap index ended 2.73% up, and the small-cap index jumped 3.91%. And we have with us online market expert Sharad Kohli. Sharad, a very warm welcome to you on Money Matters. Thank you so much. Thanks so much to all the listeners. Sharadji, what's your take on how the market is going to perform when it opens on Monday next week? When the markets performed yesterday, it went up by 520 points. So how do you see the market reacting in the coming week, especially with what's going on in the West? Well, unless something extraordinarily negative happens over the weekend, I'm anticipating that markets will open higher on Monday because, today is a holiday in the U.S. markets also. And the markets have not digested the record levels of S&P, which crossed 4,000 yesterday. So I think the world markets haven't digested that. And I think that the U.S. package, $2 trillion plus actually, it is. I think that has created a bit of boyishness in the market, and we are anticipating the markets to be remaining positive over the next week or so. Although you will keep witnessing corrections and those volatility is going to be there, but overall I feel that market may be performing slightly better than what it has been doing over the last week or so. शरद, किस तरह से देखेंगे जब जीएसटी के कलेक्शन के हमारे पास जो आंकड़े हैं वो बहुत बेहतर हैं, बाजार को कितना प्रभावित करेंगे ये, और दूसरा साथ ही साथ भारतीय बाजारों में भी, और जिस तरह से अब नया वित्तीय वर्ष भी कल से शुरुआत हो गई है, उसके परिप्रेक्ष्य में शेयर बाजार का जो पहला दिन होगा वो कितना उत्साह भरा नजर आएगा? देखिए, पहला दिन तो जैसा मैंने अभी कहा मुझे पॉजिटिव लगता है, और जीएसटी के कलेक्शन 1,24,000 करोड़ के आसपास रही है, जो कि पिछले कई महीनों में बेस्ट कलेक्शन है। पर इसमें इन सारी बातों में एक जो मुझे डैम्पनर लग रहा है, जिसको हिंदी में एक नेगेटिव होने का कारण बन रहा है, वो है जो कोरोना के बढ़ते हुए केसेस हैं। आज का भी अगर कल का काउंट देखें तो 81,000 से ऊपर केसेस थे, कल का देखें 72,000 से ऊपर थे। तो मुझे लग रहा है कि जो बढ़ते हुए कोरोना के केसेस हैं, हालांकि वैक्सीनेशन ड्राइव चल रही है, पर मुझे लग रहा है कोरोना की स्पीड वैक्सीनेशन से, कोरोना के बढ़ने की स्पीड वैक्सीनेशन से ज्यादा तेज है। तो उसको लेके मुझे लग रहा है थोड़ी सी चिंता है। अदरवाइज आप अगर भारतीय अर्थव्यवस्था की ओवरऑल ग्रोथ की बात करें तो उसका फोरकास्ट सब जगह से 10% या उससे ऊपर आ रहा है। वो बहुत अच्छी बात है, जीएसटी कलेक्शन ऊपर आ रही है। पर हमने देखा कि कोरोना के बढ़ने की वजह से जो कोर इंडस्ट्रियल सेक्टर्स की ग्रोथ थी, जो अभी 2 दिन पहले नंबर्स आए हैं, उनमें हमें फिर से एक बार गिरावट देखी है। तो इसका मुख्य कारण है कि क्योंकि लॉजिस्टिक्स पे, मोबिलिटी पे, बहुत सारे सेक्टर्स पे कोरोना के बढ़ते हुए केसेस का फर्क पड़ता है। तो अगर ये केसेस इसी प्रकार बढ़ते रहे और सरकार की चिंता बढ़ती रही, वो एक मैं समझता हूँ स्टॉक मार्केट के लिए डैम्पनर हो सकता है। अदरवाइज मुझे मार्केट आने वाले 10 दिन तक बुलिश नजर आती है कि मार्केट ऊपर जाएगी, क्योंकि यूएस में बहुत बड़ा पैकेज आया है, $2 ट्रिलियन। इस बार लोगों की जेब में सीधा पैसा नहीं डाला है, उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पर, उन्होंने केयर पर, उन्होंने जॉब क्रिएशन पर खर्च करने का कमिटमेंट किया है। मुझे लग रहा है ये किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए, और अमेरिका क्योंकि वर्ल्ड मार्केट्स को लीड करता है, अंग्रेजी में कहते हैं इफ अमेरिका स्नीजेस वर्ल्ड कैचेस कोल्ड, तो अमेरिका में इतने बड़े पैकेज का असर पूरी दुनिया पर पड़ता है और भारत उसमें एक्सेप्शन नहीं है। तो एक सिर्फ कोरोना के केसेस को लेकर मुझे चिंता है, अदरवाइज मार्केट को मैं
अगले हफ्ते बहुत बुलिश रूप में देख रहा हूं कि बहुत कुछ सेक्टर्स तो बहुत अच्छे जाएंगे, कुछ सेक्टर्स हो सकता है जो हॉस्पिटैलिटी, एविएशन और खाने पीने रेस्टोरेंट्स के जुड़े हुए वो नीचे जा सकते हैं। पर ओवरऑल मैं मार्केट को, ऑटोमोबाइल का रिजल्ट बहुत अच्छा है। आपने देखा अभी 2 दिन पहले जो आंकड़े आए हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर से, जितनी भी ऑटोमोबाइल कंपनियां हैं उनमें दुगनी तिगनी ग्रोथ हुई है और उसकी वजह से ऑयल की डिमांड बढ़ी है। तो मुझे लग रहा है कि मार्केट बुलिश होनी चाहिए, फिंगर्स क्रॉस्ड कोरोना के केसेस के मामले। Sharad, with the $2.3 trillion announcement by U.S. President for infrastructure spending, is this going to be financed out of debt securities being issued? And will there be FPI interest more in the bond market than in the equity market in the next quarter? Yes, you raised a very valid point, because the bond market has become the new James Bond of the bond rates have become the new James Bond for the market. 1.75 was the level the 10-year bond yield had climbed. In fact, that became a matter of concern for the market a couple of days ago. Yes, I think the financing would be from the taxes as well. The U.S. corporate tax rate right now stands at an average of 21%. And it is being speculated now it will probably be put to 28%. So that may again be, so you see what we need to keep in mind is that it is going to be a mixed kind of news and triggers coming from the world of financial and economy, because you will have certain positives coming in. At the same time, you will have these dampeners. So if the corporate rate goes up to 20%, 28%, I think it is going to create ripples in the corporate American market, which will again affect the stock market. At the end of the day, stock markets is listed with corporates. So how can the corporates not react to the tax financing happening from for this package? So that is one. You're right. The debt market would be the other one. And the US also doesn't hesitate to print money. I think we've been noticing that over the last 6 months or so. I mean, we've almost seen $5 trillion plus of stimulus package being given by America, and a substantial part of it was funded by printing of currency. So I do not rule that option out as well. नजर डालते हैं एशियाई शेयर बाजार पर। अमेरिका में कल शेयर बाजारों के रिकॉर्ड ऊंचाई का असर एशियाई शेयर बाजारों पर भी रहा और एशियाई बाजारों में तेजी का दौर रहा। हालांकि गुड फ्राइडे के कारण अधिकांश शेयर बाजारों में अवकाश भी नजर आया। जापान, चीन और दक्षिण कोरिया के शेयर बाजारों में तेजी का दौर रहा। अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा 2 खरब 25 अरब डॉलर की निवेश योजना से निवेशकों में उत्साह नजर आया। जापान का निकेई 1.6%, दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.8% और चीन का शंघाई कंपोजिट सूचकांक 0.5% की बढ़त से बंद हुए। Moving on to the US market, the S&P 500 hit the 4,000 mark for the first time yesterday, supported by gains in technology shares and optimism about a pickup in global economic activity. 7 out of the 11 major S&P 500 sectors rose, with technology, communication services and energy gaining more than 1%. Hope of a fast recovery supported by vaccination and $2.25 trillion government support boosted investor sentiment. A fast vaccination drive and a massive fiscal stimulus are also expected to drive a recovery in the labor market. The Dow Jones Industrial Average gained 0.5%, S&P 500 surged 1.2%, and the Nasdaq Composite Index logged robust gains of 1.8%. Very briefly, Sharad, can you tell us what the impact is going to be on the commodities market, especially oil and gold? Very briefly. Well, oil market is sounding bullish. We saw the OPEC meeting happening on the 1st of April. They haven't decided to increase the supply. I think, but the oil prices, I personally feel, are going to remain high in the weeks to come. शरद, हमारे साथ चर्चा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मनी मैटर्स के इस बुलेटिन में आज बस इतना ही, और अब चलते चलते एक नजर आज की आर्थिक सुर्खियों पर एक बार फिर। इस सप्ताह सेंसेक्स और निफ्टी में 2% से अधिक की तेजी रही। छुट्टियों से भरे सप्ताह में मिड कैप और स्मॉल कैप का सेंसेक्स से बेहतर प्रदर्शन, और अमेरिकी शेयर बाजार में रिकॉर्ड तेजी से एशियाई बाजारों में भी रौनक का दौर। And that's it in this edition of Money Matters. For now, goodbye.